Hello my dear students, welcome back. Here we are with the second part of the same lesson, that is lesson number 3, Humidity and Clouds. Right? Now in the previous part, that is in module 1, we have learned about humidity. We have learned about the types of humidity. Now we are going to learn about the next one, that is clouds. Right? So let us see. Right? So today in this module, we are going to speak about the topic, that is clouds. Right? Now before we start with this lesson, let us try one activity. Now what is this activity? You are going to take a pressure cooker. Now in that pressure cooker, you are going to pour water. आप उसमें पानी डालने वाले हो. Then you are going to close that pressure cooker and without whistle, you will remove the whistle of the pressure cooker and you will on the gas. Right? Now when you on the gas, you can see that what comes out from the whistle section is the vapor. Right? Now what you're going to do is that you're going to take a pan, a roti maker pan, right? And that pan you will keep near that to the nozzle from where the vapor comes out. Right? Now after some time you can see that on that pan or under that pan you can see very fine drops of water. Water droplet comes to it. है ना? Right? ये देखा है कभी? Okay. Now, one more activity let us do. We are going to take an empty glass. In that empty glass, we are going to take some pieces of ice. After some time, what you can see, right? This you can see that the outside of the glass will find fine drops of water. From where these fine parts of droplets have come, and that too not inside, from outside of the glass. From outside of the glass, from where is all fine droplets of the water has come from, right? So in the first activity, we have seen the steam from the cooker cooled and condensed into water droplets. Now in the second activity, the vapor in the air also got condensed, right, into water droplets, and that we can see. So here we go for the topic under clouds, that is condensation. Condensation is also called as densification. It's also been called as sublimation. Right? Now the process of changing, okay, the process of changing the water vapor in the air into the water is called as condensation or densification. Got it? Right? So, what I said, the process of changing water vapor in the air, okay, into water is called as condensation or densification, right? Also, the process of vapor, or we can say like gas changing into solid state, is called as sublimation. Got it? Now, if the temperature of the air reduces, its vapor holding capacity also reduces. When we learned about humidity, I told you this point, है ना? Right? अगर temperature less है, तो उसका vapor holding capacity also reduces. Now, when the relative humidity of the air becomes 100%, vapor starts condensing. अगर relative humidity 100% है, इसका मतलब है condensation start हो गया है. At this time, temperature of the air should be, or we call this temperature, right, at dew point. Again I repeat, this state is called as dew point. What is dew point? जब 100% RH होता है, then it is called as dew point. Okay, temperature in the air is called as dew point. Got it? Right? Now it implies for condensation, temperature should be low and humidity, that is relative humidity, must be high. Okay, for condensation, temperature should be low and RH should be high. Right? Now, you can see here again one more image related to that. Temperature low होना चाहिए और क्या ज़्यादा होना चाहिए? What should be up? It should be RH, that is relative humidity. Now, in this free environment, condensation of the vapor
that is in the air occurs around fine particles, that is we call it as dust particles, salt particles, etc. in the air. Dew, frost, fog are the forms of condensation at the ground level. Okay, कभी देखा है आपने dew drops? हाँ, right? dew drops को कभी देखा है? What do you mean by dew drops? एकदम छोटे छोटे droplets. सब सुबह morning time when you are walking without slippers, when you are walking on the grass is wet. Okay, or if you see outside, if the cars are kept, the glass of the car, if you touch the glass of the car, it is wet. What is that wet thing? It is nothing but dew drops, right? Frost means what? Frozen. At a higher altitude, what happened? Because this moisture which is there in the air, due to what? Cold temperature, turns into frost, means it turns into ice, right? Fog means what? When lot of this moisture comes together, they are visible, you can see them, right? And that we call it as fog, right? You can see this example from here. Now you can see, as I said, you can see the small drop particles on the leaves. What are they? They are the dew drops. We call them as an dew drop. अभी leaves कैसे होता है? ठंडा होता है in the winter morning. इसलिए जो भी आजू बाजू का air होता है, air में जो भी vapor होता है, moisture होता है, वो उस leaves पे जाके settle होता है. समझ में आ रहा है? Right? So that is called as dew drops. Now you can see in winter, if there is a high altitude or in the polar section, winter में पेड़ पौधों को ऐसे frost होता है, यानी ice जमा होता है. वो ice क्या होता है? It is nothing but जो हवा में जो भी in the air, whatever the water vapor is, it get frozen and it gets settled on these objects, right? Now in the free environment, as I said, right, fog is formed. आप देख सकते हो कि fog बनता है. Fog किससे बनता है? It is again due to the water vapor present in the air, and if the temperature is cold, these all water vapor comes together, and when they come together, it is visible. इसलिए same thing you can see in the fridge, in the refrigerator, या आपका AC. अगर आप fridge खोलते हो तो एकदम सफेद हवा बाहर आती है. What is that? It is nothing but condensed air. In the AC, when you see continuous AC, from AC also you can see that white color air comes out. What is that? It is condensed air. Got it? So this is what is called as condensation. So I repeat, dew, frost, fog, these three are the forms of condensation at ground level. Ground level यानी जमीन के आसपास. ड्यू जमीन के आसपास होता है, फ्रॉस्टिंग भी जब जमीन के आसपास होता है, या फिर हम लोग कहते हैं ना फॉग भी आसपास ही होता है. लेकिन ऐसे एक चीज है, वो कंडेंसेशन होता है, वो हम लोग से बहुत दूर होता है, आसमान में होता है. जो हमारा टॉपिक है, क्या है वो? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज क्लाउड्स, right? So while clouds are a form of condensation, but where it is at a higher elevation. Okay, ये condensation कैसे होता है? एक ऊंचाई पे होता है. At a higher elevation this condensation takes place. And now we are going to a topic. The topic is called as clouds and the types of clouds. इसको ध्यान से सुनो, इसका pronunciation याद से देखो. Okay, now we are talking about the types of the clouds. Right? Clouds are a form of condensation but at a higher level. Lower level के लिए क्या बताया था? Dew, frost और fog. Now we are talking about the clouds. Clouds are also condensation, but where? At a higher elevation, at a higher level, right? So here we go with the next one. Now condensation occurs around minute particles. Minute particles in the atmosphere. Condensed water or snow particles in the clouds are very fine and almost weightless, right? Okay, and they accumulate around dust particles in the air and becomes large in size. ये जो छोटे छोटे particles है ना, जमा होते हैं dust particles के साथ, वो mix होते हैं और वो visible होते हैं, इसलिए आपको clouds दिखता है. समझ में आ रहा है? ये जो small moisture है, ये एक जगह जमा होते हैं with the help of dust, salt present in the air, and they are visible. And these visible thing is nothing but clouds, right? And when these things becomes large in size, the accumulation together is called as cloud. We call it as an cloud. Now because of vertical flow, vertical यानी जमीन से ऊपर जा रहा है ना वो vapor, right? So because of this vertical flow of the wind in the atmosphere, okay, right? How it looks like a kite.
वो क्लाउड्स कैसे होते हैं, हमेशा क्लाउड्स एक जगह फिक्स नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज मूविंग. इट इज लाइक अ काइट विच फ्लोट्स इन द एयर, right? And as we move higher and higher, right? So the clouds always go higher and higher above. Now clouds are formed, or we can say like clouds are found at different altitudes. Altitude yani height, alag alag height pe alag alag clouds, right? Now clouds are found at different altitudes above mean sea level. Clouds which form at a greater altitude are formed from very fine snow particles. The process of evaporation and condensation occurs consequently in the clouds. Okay, right? Now specific type of clouds cause rainfall on the earth. You can see हम लोग कहते हैं ना काले बादल छा गए हैं, यानी बरसात होगी, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हर एक क्लाउड बरसात नहीं देता, राइट? वो क्लाउड्स अगर वो सैचुरेशन लेवल तक आ जाता है, दैट टाइम जब उसमें सैचुरेशन लेवल आता है, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द क्लाउड बिकॉज इट बिकम्स डार्क इन कलर, right? And so we say only specific type of clouds cause rainfall on earth, so that we should not forget, right? Now if the proportion of vapor is more near the earth's surface, as we go higher away from the sea level, the amount of vapor decreases. Hence the cloud at a lower altitude are larger in size, right? While the clouds at a higher altitude are smaller in size. Keep that in mind, right? What I say, if the proportion of vapor is more near the earth's surface, right, we can see the clouds here are large in size. नजदीक clouds बड़े होते हैं, लेकिन ऊपर जैसे आप ऊपर जाओगे, you can see the clouds at a higher level, they are smaller in size. You can see this. ये आपको बराबर से बताएगा. यू कैन सी दिस इमेज. नाउ फ्रॉम दिस इमेज इट इज वेरी क्लियर. जो नजदीक वाला क्लाउड्स है वो बहुत बड़ा होता है, और वी कैन सी इट वेरी क्लोज, राइट? जैसे ही आप ऊपर जाते हो, क्लाउड्स का साइज कम होता है. ओके, एट हायर ऑल्टीट्यूड द क्लाउड्स आर स्मॉलर इन साइज. Okay, now let us divide this cloud. Now we are going to see these clouds. Let us see these clouds. Okay, now these are the types of the clouds, and pay attention to the name of these clouds. Okay, clouds and the types according to international classification. Right, now there are clouds. Now clouds are classified on the basis of height, that on what height they are present. So on the basis of that we can divide clouds into four, right? Now the first one is the cirrus, cirrostratus and cirrocumulus. First one is cirrus, cirrostratus and cirrocumulus. Now these are found at 7,000 to 14,000 of height. ये सबसे ऊंचाई पे मिलते हैं. Then the next one is altostratus and altocumulus. Now these kind of clouds are seen where at a height of 2,000 to 7,000, right? Then stratocumulus and stratus, as well as nimbostratus. This kind of clouds you can see at the height less than 2,000. Okay, then we are talking about meters, right? Then again the last one is cumulus and cumulonimbus. These are, they extend, you can see like the extent could be variable, means it is not fixed. It can go to 2,000 or between 2,000 to 7,000. Okay, these clouds are formed. Now clouds are formed at different altitude, as I said, in the atmosphere, right? So after observation we can divide clouds into three main types on the basis of their altitude, right? Now the height from the base of the clouds is taken into consideration, right? अभी हम सबको पढ़ेंगे, right? We are going to see. Now you can see the clear image of it. Now from this it is very clear that clouds are formed at different altitudes, है ना? ये तीन टाइप का clouds दिखा है, तीन अलग अलग हाइट. पहला हाइट कौन सा है? 7,000 to 14,000. सपोज सबसे ऊपर वाला है. फिर उसके बीच वाला जो है that is 2,000 to 7,000, और नीचे वाला है it is less than 2,000. Got it? So in this way we are going to divide it into three. You can see, yes, the first section, it is about 7,000 to 14,000. It is very high clouds. उसको हम कहते हैं very high clouds. फर्स्ट जो है एकदम ऊंचाई पे है, उसको क्लास को नाम दिया है very high clouds. Second class, that is between
2000 to 7000 meter, that we call it as medium clouds. इसको हम कहते हैं medium clouds. Okay, right? Then the third one which we are talking about is less than 2000 meter, and we call these clouds which is less than 2000 meter as the lesser clouds. Okay, right? Now let us see this in detail. Now let us speak about the top one. सबसे ऊंचाई पे है ना वो clouds क्या होता है, उसका characteristics क्या होता है, that we are going to see now, right? Now we are talking about the high clouds. Now these clouds are mainly made up of ice particles. ये जो सबसे हाइट पे होता है वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है, वहां पे टेम्परेचर काफी लो होता है. द टेम्परेचर इज वेरी लो देयर, एंड सो यू कैन सी हियर द क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू साइरस, then Cytocumulus, as well as the which one I said as the Cytostratus. चलो देखेंगे. Right, now we will go to Cytocumulus clouds. Now these clouds are mainly made up of ice particles, as I said, right? Now then second ones we will see about the cirrus clouds, and the third one we will see about the Cytostratus clouds. Hope this is clear. We are talking about which clouds? We are talking about the clouds which are at the height of 7000 to 14000. Right? Now here cirrus clouds are mainly wispy. Wispy मतलब होते हैं पतले, thin. मैंने बताया था ना, जैसे ऊपर जाओगे clouds छोटे होते हैं, है ना? तो ये वाला क्लाउड्स आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली हम लोग के यहाँ से वो क्लाउड्स दिखते नहीं है क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है. अगर आप फ्लाइट में, प्लेन में होंगे तो शायद ये क्लाउड्स दिख सकते हैं आपको. What are they? They are the cirrus clouds. Okay, they are mainly wispy. Wispy यानी thin, पतले होते हैं ये clouds. Got it? Then Cytocumulus. Cytocumulus clouds. They look like the group of small waves. अब देख सकते हो इमेज कैसा लगता है, वो waves के जैसे दिखते हैं, ऐसे ग्रुप लगता है of waves. Got it? Then the Cytostratus are like a bed sheet. ये कैसे लगता है, जैसे बेडशीट फोल्ड करके रखने के बाद हम लोग रखते हैं ना, तो वैसे लगता है, व्रिंकल्स वाला बेडशीट के जैसा दिखता है. दे जनरली हैव अ हैलो अराउंड देम. हैलो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट्स. ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक ऑरा, जैसे भगवान, अगर भगवान का फोटो देखते हैं तो उसके पीछे, भगवान के पीछे कैसे ऐसे सन होता है, एक हैलो होता है, वैसे ही ये क्लाउड्स होते हैं ना. इस क्लाउड्स में से जो सनशाइन बाहर निकलती है तो इसलिए उसको कहते हैं इट इज ऑलवेज हैविंग अ हैलो. हम लोग कहते हैं ना ऑलवेज अ क्लाउड इज हैविंग अ सिल्वर लाइनिंग. सिल्वर लाइनिंग वाला क्लाउड्स जो होता है वो ये होता है, दैट इज साइरोस्ट्रेटस. गॉट इट? देन let us see the clouds of the medium height. Now these includes the Altocumulus. These includes the Altocumulus and then Altostratus. Okay, these are the two types of clouds we can see in the medium height. You can see how they are, right? Okay, that is Altostratus clouds. Altostratus, again, if we are talking about, they are not very thick. ये भी thick नहीं होते हैं. Now the sun can be seen through them. इतने पतले होते हैं, एज वी सी दैट इज थ्रू मिल्की ग्लास. हम लोग मिल्की ग्लास में से कैसे देख सकते हैं, वैसे इसमें से भी सन दिखता है. ठीक है. नाउ लेट अस सी द क्लाउड्स ऑफ द लो लेवल, और वी कॉल इट एज लो क्लाउड्स. राइट, नाउ दिस कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स. इसमें 5 टाइप्स इंक्लूडेड है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दे. दे आर द स्ट्रैटोक्यूमुलस. ओके, स्ट्रैटोक्यूमुलस जिसको लेयर्स होते हैं. Okay, now we call it as stratocumulus. You can see how is the stratocumulus. उसमें layers होते हैं. These clouds are having layers and their color is white. ये बहुत सफेद clouds होते हैं. Okay, and to the earth ये बहुत white color होते हैं. Now then again you can see the next one is stratus. Now round clusters clouds can be seen here. Stratus clouds are also having layers in it. They many times are having ash color. स्ट्रैटस को ज्यादा करके एश कलर होता है, एंड देयर बेस इज यूनिफॉर्म. राइट, देन लेट अस सी द नेक्स्ट वन इज निम्बोस्ट्रैटस. द नेक्स्ट वन इज निम्बोस्ट्रैटस. निम्बोस्ट्रैटस हैज थिक लेयर. ओके, इसमें थिक लेयर होता है, एंड दे आर ग्रे एश इन कलर अगेन, एंड दे कॉज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड स्नोफॉल. निम्बोस्ट्रैटस इज गिविंग रेनफॉल. राइट, देन लेट अस स्पीक अबाउट द क्यूमुलस क्लाउड्स. Now these clouds are formed extensively
from 5000 meter to 6000 meters of altitude. See this, right? ये जो है clouds कहाँ पे usually form होता है? I'm talking about cumulus. These clouds you can see between the range of 500 meter to 6000 meter of altitude, right? Now the vertical flow of the air add to the formation of these clouds. Now you can see these clouds, इसका shape usually कौन सा होता है? Usually the shape of these clouds are huge and they are dome shaped. डोम शेप में होता है ना? हाफ सर्कल हम लोग जिसको कहते हैं, सेमी सर्कल, एंड दे आर ग्रे इन कलर, राइट? नाउ लेट अस स्पीक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज क्यूमुलस क्लाउड्स आर एन इंडिकेटर of pleasant weather. अगर ऐसा clouds है then they are the indicator of pleasant weather. The vertical expanse of these clouds increases so much that they turn into cumulonimbus clouds and that cumulonimbus brings rain. Okay, ये वाला जो cloud हम लोग अभी देख रहे हैं ये बारिश लाता है. Okay, यानी कौन सा cloud? Cumulus ही आगे बढ़ने के बाद बन जाता है क्यूमुलोनिम्बस. क्यूमुलस क्लाउड जब ऊपर जाता है, ओके, इंक्रीज होता है और ज्यादा इंक्रीज होने के बाद वही क्यूमुलस बन जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो बरसात देता है, दैट गिव्स रेन, राइट? नाउ दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड्स, राइट? लेट अस स्पीक अबाउट दिस, दैट इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. Now which are the indicators of thunderstorm? ये आवाज करते हैं क्लाउड्स, गड़ 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 गड़. बरसात के पहले जो क्लाउड्स आवाज करते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, ठीक है? सो दे आर कमिंग विद अ थंडरस्टॉर्म, राइट? नाउ दीज लुक लाइक ह्यूज माउंटेन. आप देख सकते हो कैसे दिखते हैं, वो एकदम डार्क है, ह्यूज माउंटेन्स के जैसे लग रहे हैं ना, डेंस है, डार्क इन कलर है, राइट? Then very importantly that there is thunder accompanied by lightning. इसमें lightning भी होता है. lightning मालूम है ना, बिजली गिरती है, right? So it is coming with the lightning and they bring rain with the storm, यानी हवा के साथ बरसात होती है, right? And may sometime brings hailstones. अभी hailstone तो आपको मालूम होगा ना, ये देखो, this is an image of hailstone you can see, right? But in such places or this type of rain does not last long. ये वाला बरसात ज्यादा नहीं होता है. It is only for some time or some period, right? Now the largest of these clouds bring rainfall accompanied with lightning. Now the top portion of these clouds you can see are the anvil like shape. ये जो cloud होता है ना, उसका ऊपर वाला हिस्सा देखो कैसा दिख रहा है, वो anvil के जैसा दिख रहा है ना, एक stand के जैसा दिख रहा है, flat surface दिख रहा है. The air around the lightning rises up because of the heat and these leads to a large thunder sound. Okay, ये जैसे ही हवा ऊपर जाती है large thunder sound होता है. अभी आपको बताती हूँ इसमें lightning कैसा होता है. Okay, now these clouds, let me tell you, they develop opposite charges. ये clouds में height के ऊपर positive charge, नीचे बेसल सेक्शन में इस क्लाउड्स में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ओके? अर्थ में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एंड दैट गिव्स, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इस चार्जेस के वजह से लाइटनिंग होता है. दैट मीन्स लाइट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट चार्जेस, right? So the largest of these clouds brings rainfall, as I said, with the lightning. You can see कि ये cloud जब आते हैं तो ऐसी बिजली कड़कती है, गड़गड़ आवाज होता है, that is thunderstorm भी आते हैं, okay? बिजली के साथ बरसात होती है, right? So it comes out with a huge sound. Got it? Now as compared to the other clouds, now the raindrops of these clouds are larger because they move up and down a lot of times, okay? And they accumulate a lot of moisture or a lot of water with them. Drops becomes larger and larger in size and are unable to float in the clouds because of their weight and they come down. है ना, ये जो बरसात होती है ना, जो लाइटनिंग और थंडर के साथ, इसमें बूंदे, जो बरसात की बूंदे होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, उसका वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ओके? दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन. Sometimes अगर air is in the clouds that is very cold, बारिश तो होती है ना, बहुत thick clouds में मतलब thick rainfall होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है बच्चों, कि टेम्परेचर ड्रॉप होता है,
अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, बरसात तो रेडी है, लेकिन जब वो बरसात नीचे गिरती है, इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ दिस वी कॉल इट एज हेलस्टोन, राइट. सो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो लाइटनिंग एंड थंडर वाली बरसात होती है ना, व्हेन हैपेंस दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, बट समटाइम्स इफ द क्लाउड्स इज गेटिंग वेरी कोल्ड एयर, या ठंडे हो जाते हैं ये क्लाउड्स, एज अ रिजल्ट दीज ड्रॉप फ्रीजेस. ये जो ड्रॉप है ना बरसात के, ये फ्रीज हो जाते हैं, यानी उसका आइस होता है, एंड इट फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ हेल. इसको कहते हैं हेल शॉवर या हेल स्टोम भी कहते हैं. वी कॉल इट एज हेल स्टोन्स. ठीक है, राइट. नाउ लेट अस सी द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट. हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट. नाउ डू यू नो व्हाट इज दिस? व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. ये भी एक प्रेसिपिटेशन का टाइप है विच इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट. रेन ड्रॉप्स कमिंग towards the earth are stopped in the clouds itself because of strong vertical wind. You can see how is the wind going? Wind is going upward. ऊपर विंड जा रहा है, इसलिए बरसात गिरने वाली है, लेकिन वो ड्रॉप्स नीचे नहीं गिर रहे, वो क्लाउड्स ऊपर ही है और उसमें बरसात का ड्रॉप्स बढ़ रहा है, राइट. ओके, एंड these drops then becomes hell. ये क्या होता है? ये हेल में कन्वर्ट होते हैं. These drops change into hell and this makes the clouds heavier and the vertical winds are unable to bear the weight of that hell, and this leads to heavy rainfall with large size balls of hells coming down in force due to gravity, and this we call it as cloud burst. In short, shower of hell or hailstorm is called as cloud burst. बहुत बड़े बड़े हेल गिरना आसमान से विथ थंडर साउंड एंड लाइटनिंग, इससे अगर हेल शॉवर होता है देन दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट. ओके, राइट. होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू ऑल. हियर वी कम्स टू द एंड ऑफ द लेसन, right? This lesson is very easy, my dear students, and I want you all, after you see this video or after you watch this video, you are going to read that lesson, and if you have any kind of doubt, we will meet again in a doubt clearing session. In that live session you can ask me doubts. Okay, now I'm been giving you notes. Yes, I have told you that you'll be completing your notebook. You're going to make a separate geography notebook. Make sure that you're completing your notebook as soon as the lesson is over. Thank you. Have a nice day. Bye, dear students.